पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। आज ही oladoc ऐप डाउनलोड करें। oladoc, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। Assalamu alaikum. My name is Dr. Asma Ansari. I'm a dermatologist and an aesthetic physician, and today I'm going to talk about all what you need to know about chemical peels. Chemical peels के बहुत सारे सवालात मेरे पास आते हैं, अक्सर पेशेंट आके ख़ुद पूछते हैं, और आज मैं एक शॉर्ट सी आपको इन्फॉर्मेशन दूंगी कि व्हाट इज़ केमिकल पील। एज द नेम इंडिकेट्स, लोग ये समझते हैं आप अपने स्किन पे केमिकल्स लगा रहे हैं। डेफिनेटली देयर आर सर्टेन केमिकल यूज, बट मैं लोगों को ये बात समझाती हूँ कि वाटर भी, अगर आप केमिस्ट्री के हिसाब से देखें, सो वाटर इज़ अ केमिकल। केमिकल पीलिंग आर एक्सेलेंट प्रोसीजर्स एंड उसकी बहुत सारे जो इंडिकेशंस हैं, दे कैन बी यूज टू लाइटन अप योर स्किन टोन, दे आर फॉर योर पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, दे आर फॉर एक्ने स्कार्स, एक्ने मार्क्स, ठीक है, दे कैन बी यूज फॉर योर स्ट्रेच मार्क्स, ठीक है, दे कैन यूज बी फॉर melasma, they can use to lighten your skin complexion and give you a glow, brighten up your skin. तो केमिकल पील मेरा एक बहुत पसंदीदा प्रोसीजर है। वाई? बिकॉज इट इज़ एक शॉर्ट सा प्रोसीजर है, क्लिनिक में ईजिली परफॉर्म हो सकता है, और इट हैज़ लेस टाइम, एंड if it is performed after evaluation of your skin and by a good doctor or dermatologist, then you don't have to be worried because उसके इतने कोई ख़ास side effects नहीं हैं। ठीक है, chemical peels, what you have to do, the doctor or your dermatologist should assess your skin type कि आपकी skin type कैसी है। Asian skins are usually between 4 to 5 type skins होते हैं, their skin of colors, and you need to know कि what is the cause of the pigmentation। या आपको आपके पहले जो skin assess आपको करना बड़ा ज़रूरी है कि जो patient आपके पास आ रहा है उसकी skin किस type की है, and the person who's performing the procedure should be very well known कि what are the pros and cons। उनको आपकी skin की preparation, skin priming करना आनी चाहिए, and they should suggest a suitable peel for your skin type. Now there are certain types of peel. Certain types of peel, usually they're falling in the category of superficial, medium and deep peels होती हैं। Superficial or very superficial peels usually they're for your skin, usually skin regeneration के लिए होती हैं। acne marks, post inflammatory hyperpigmentation, जैसे मैंने आपको बताया, वो सिर्फ superficial layer of your skin जिसमें epidermis है, sometimes only stratum corneum, वो आपके pores को भी improve करती हैं। there are certain names of the peels, आप लोगों ने सुना होगा, salicylic acid peel है, mandelic acid peel है, glycolic acid peel है, और अब तो न्यू पील्स भी आ गई हैं जिसके अंदर हमारे पास रेटिनॉल पील्स हैं, पायरुविक पील्स हैं, देयर मिक्सचर कॉम्बिनेशन ऑफ सर्टेन एंजाइम्स एंड फ्रूट्स, एंड दे आर रियली प्रॉमिसिंग एंड दे हैव अ गुड रिजल्ट। इन सम पेशेंट्स दे आर रियली गिविंग अस वेरी नाइस रिजल्ट्स। एंड देयर इज एन ओल्ड, सुना होगा आपने, जेसनस पील जिसके अंदर ग्लाइकोलिक, रिसोर्सनॉल, देयर आर मिक्सचर ऑफ अदर पील्स। सो ऑल दीज केमिकल्स आर देयर एंड दे आर बेनिफिशियल। जैसे एक्ने की रीजनरेशन के लिए, एक्ने मार्क्स हो जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छे हैं। अगर किसी को melasma है, स्किन लाइटनिंग करनी है, और सन डैमेज्ड या फोटो एजिंग है, तो उसके लिए भी बड़े अच्छे रिजल्ट्स हैं। और जो बहुत डीप पील्स है, यूजुअली दे आर नॉट रिकमेंडेड, जो हम यूज़ करते हैं उसमें फिनॉल या क्रोटॉन आ जाती है, वो फिर दे आर यूजुअली नॉट परफॉर्म्ड इन द क्लिनिक्स क्योंकि वो आपकी डीपर लेयर ऑफ द स्किन होती है। सो आई वुड रियली रिकमेंड, इट इज़ अ वेरी नाइस प्रोसीजर। इवन टीनेजर्स कैन हैव दिस प्रोसीजर्स, एंड केमिकल पील्स combined with certain things like PRP and lasers, they give excellent results on your skin. They give you a smooth complexion, a brighter look, and I would definitely recommend that this procedure should be thoughtful अगर आपको you're concerned about your skin or if you need to have a glow on your skin. Thank you. पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही oladoc ऐप डाउनलोड करें। oladoc, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से।